वेलकम टू प्रभात फिजिक्स डायमेंशन वीडियो 3। आज वीडियो रे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन टू डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल क्वांटिटी रा एप्लीकेशन रे किछि क्वेश्चंस करिवा। सिंपल क्वेश्चंस किसी वीडियो रे करिवा। तो वेवलेंथ लैम्बडा क्वेश्चन ए अछि वेवलेंथ लैम्बडा एसोसिएटेड विथ revolving electron depends on mass and velocity and Planck's constant. Okay, तो एक क्वेश्चन स्क्रीन में आसीबो। क्वेश्चन स्क्रीन देखिबे से कोठी क्वेश्चन ता होजे और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करूची न्यूक्लियस चारिपटे रे रिवॉल्व्स करूची इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स करूची। तो एठी इट्स मोशन associated with a wave। तो wavelength of this motion depends करछि कहा पर velocity ऊपर mass of electron ऊपर और Planck's constant ऊपर डिपेंड करछि। ताले आबे एडू तीनटा भीतर रिलेशन एस्टैब्लिश करिबा। हमें शो करना थी लैम्बडा इक्वल टू लैम्बडा इज प्रोपोर्शनल टू h by mv प्रूफ करेगा। आउ फिर कौन क्वेश्चन था वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन मास वेलोसिटी एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। तो बेसिकली पिला माने जरा हम क्वेश्चंस करिवा तो जेतु फर्स्ट चैप्टर चलछि तो गुडे टर्म से हम रिलेटेड नो हम सिंपल खाली मन रखिबा जे वेवलेंथ तीनटा फैक्टर पे डिपेंड करछ से कोन आर थ्योरी बुझाउ चेष्टा करिबानी जे एटा बुलले इलेक्ट्रॉन ता एटा ड्यूअल नेचर आसी जाउची डी बगली वेवलेंथ आसी जाउची इलेक्ट्रॉन नो मोशन ता कोन ना होची इलेक्ट्रॉन मूव करची से एसोसिएटेड विथ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ दिस वेव अकॉर्डिंग टू डी बगली से कथा भितर हम जिबानी हम सिंपल रहबा जे सिंपल हम एटी बुझिबा जे हमर वेवलेंथ रा वेवलेंथ दा स्ट्रक्चर करछि गोटे जा क्वेश्चन जानि परिबो वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ता डिपेंड करछि कहा पर तीनटा फैक्टर पे डिपेंड करछि। वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू मास टू द पावर x दिस इज इक्वेशन 1। देन वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी टू द पावर y इक्वेशन 2। देन प्रोपोर्शनल टू कहते प्लैंक्स कांस्टेंट टू द पावर z। ओके दिस इज इक्वेशन 3। कंटेंट को टे बुझो आराम रे होल्ड कर जाउची वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करची। कोन डिपेंड करची ना मास ऊपर डिपेंड करची वेवलेंथ मास ऊपर डिपेंड करची वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करची और प्लैंक्स कांस्टेंट ऊपर डिपेंड करची। प्लैंक्स कांस्टेंट h ऊपर डिपेंड करची तीनटा फैक्टर ऊपर वेवलेंथ डिपेंड करची। तो एबे lambda proportional to m to the power x lambda proportional to velocity to the power y एमती रिलेटेड करछि। सपोज lambda proportional to h Planck's constant to the power z। तो दिस थिंग कमेंट दिस फैक्ट इट फैक्ट को कमेंट करबा कमेंट दिस फैक्ट्स एबन उते कमेंट कर दोछि lambda proportional to mass to the power x velocity to the power y Planck's constant to the power z। तो जले प्रोपोर्शनल कांस्टेंट उठी जाए तो कांस्टेंट पळे आसो लैम्बडा इक्वल टू एटे एक कांस्टेंट असला k आसीला कांस्टेंट k m टू द पावर x v टू द पावर y h टू द पावर z। तो दिस इज द फोर्थ इक्वेशन वेरी इंपोर्टेंट इक्वेशन। तो बुझि गेला बे ए k इज कोन डायमेंशन लेस कांस्टेंट दिस केस आर डायमेंशन नाही। ठीक अछि बुझिला एबे कोन करबा समस्त को डायमेंशन पुट कर दबा। बहुत बढ़िया 3 मार्क क्वेश्चन 2 मार्क क्वेश्चन आसीबो स्कूल एग्जाम रे एबे समस्त को डायमेंशन पुट कर दबा। लैम्बडा मीन वेवलेंथ खाली l रहइबो आ समस्त m0 l1 t0 लैम्बडा इज वेवलेंथ अब न लिखले भी चलेबो बट लिखि देली लैम्बडा हो जते खाली लेंथ रहइबो लेंथ रे m0 l0 लिखाला। तो तापर k इज डायमेंशन लेस कांस्टेंट काटी दो तको ताले मास माने m रहला ऊपर x रहला। तो वेलोसिटी
velocity मन अछि L1 t minus 1 to the power y ठीक कैरी कर क्वेश्चन ताले प्लैंक्स कांस्टेंट भाई प्लैंक्स कांस्टेंट रो डायमेंशन सपोज तमर मन नाही कोन करबा प्लैंक्स कांस्टेंट होती एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी वीडियो 2 रे थला प्लैंक्स कांस्टेंट रो फार्मूला भाई आराम एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी एनर्जी जहा 1 सेया आराम रे जीवा m1 l2 t - 2 बाय फ्रीक्वेंसी इज t - 1 तो हो गया क्या m l2 t माइनस के 1 है दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट जदि के घोषिया पड़िबनी मुखस्त करिबनी मन रखिबनी प्लैंक्स कांस्टेंट कोन हम आउ करे साइड रे बाहर करबनी प्लैंक्स कांस्टेंट होती एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी दिस इज m1 l2 t - 1 एटा ऊपर गेले प्लस हे जिवो ओके ठीक अछि तो एटा ए लिख देबा m1 l2 t - 1 ऊपर केदा भाई z एबे एटा लिखौची प्लस तो बाहर गेला तो एबे देखो कोन करबा m0 l1 t0 आराम रे स्मूथ रे ड्राइव करो m टू द पावर x ओके भाई हे गला एबे l y t minus y ओके भाई तबे h z एठी मल्टीप्लाई हो के को कंटेंट ना होची a टू द पावर m ऊपर m तले को a टू द पावर mn ओके को सार हम जानि तो यस तुम जानतो जे न जानतो ताको भाई कहली ओके ठीक अछि m z l this is 2z t minus z ओवर भाई हो गेला एबे सिमिलर टर्म पाके लख देबा कोन करबा m0 l1 t0 ओके भाई क्लियर m गोटे अछि गोटे अछि केता हो s इक्वल अछि एक्सपोनेंट ऐड हबो m plus z l y plus 2z ओके बेटा तो t केदा अछि -y -z ओके हो गया तबे इक्वेटिंग कर दबा दिस एंड दिस m इक्वल अछि एक्सपोनेंट इक्वल x plus z equal to 0 x equal to -z पूरा हल्का y plus 2z equal to 1 this l equal to l तो दिस ऊपर एक्सपोनेंट इक्वल हबो -y -z equal to 0 okay that means -y equal to z ठीक अछि तो इन दिस प्लेस ए जो z प्लेस रे हम -y लिखि परिबा 2 -y 1 y प्लस माइनस माइनस 2y आराम रे हल्का फुल्का तो -y equal to 1 y equal to -1 भाई टोटल वैल्यू आरेगा y equal to -1 तो y equal to -1 आराम रे लिनियर y -1 तो माइनस y प्लस लिखिबा -1 ओके दिस इज z तो इंप्लाई z equal to +1 आराम रे y equal to -1 z equal to -y माइनस y प्लस रे -1 माइनस प्लस z ओके ठीक है भाई तो ये सिंपल पड़े ऐसा x equal to minus z z is 1 okay x is -1 y is -1 z is +1 तीनटा रो वैल्यू हारि गला ओके 100% रेट का लाइन 100% कंटेंट तीनटा हारि गला ठीक अछि ओके तो एबे हमें ई कंटेंट को डेवलप करी के जो x y z रो वैल्यू को 4 रे पुट करिवा पुट value of x y z in equation केते 4 equation 4 रे काहा पुट करबा x y और z रो वैल्यू को पुट कर देबा तो लैम्बडा इक्वल टू k m m टू द पावर x केते बेटा अछि x इज -1 v y केते अछि -1 h z केते अछि +1 ओके ठीक अछि ओके तो एबे जे जोडा तळे अछि लैम्बडा केते आसीबो k h वेला नेगेटिव डा तळे पॉजिटिव हे गेला ओके ठीक अछि तो k इज कांस्टेंट हियर k इज कांस्टेंट भाई k डा कांस्टेंट k इज कांस्टेंट डायमेंशनलेस कांस्टेंट
dimensionless constant. K constant আছে ভাই, constant. If K is constant, that means lambda is proportional to h by mv. Okay, ये डी वर्ग इक्वेशन केमिस्ट्री पढ़ा हबो, फिजिक्स रे पढ़ा हबो, से समय हे रे एबे डायमेंशनल एनालिसिस को अप्रोच करी मु प्रूव कर देली लैम्बडा हाउ रिलेटेड विथ द प्लैंक कांस्टेंट मास एंड वेलोसिटी. ओके, दिस इज द कंटेंट. स्क्रीनशॉट लियो, आउ सब टिके एनालिसिस करी आउ नेक्स्ट क्वेश्चन जाउ. एमती 10 कोटा क्वेश्चन कला पर तुम जानि परिबो केमती अप्लाई करछि आ आपको नै करी नीट जे रे केमती क्वेश्चन आछि, भयंकर क्वेश्चन आछि. अरे भयंकर लेंदी प्रोसेस हबो, आस्ते आस्ते को सॉल्व करिया चेष्टा करिबा. क्वेश्चन कहिछि द वेवलेंथ of revolving electron, but electrons nucleus रे revolves करछि. This motion associated with wave. तो wavelength of this wave depends on कहाँ पर डिपेंड करछि ना मास पर डिपेंड करछि, वेलोसिटी पर डिपेंड करछि, प्लैंक्स कांस्टेंट पर डिपेंड करछि. तो एते कथा कि बुझिया दरकार नै, सीधा दरकार दे wavelength depends on mass, velocity and Planck's constant. So what is the relation between them? The third application of dimensional analysis, how to derive relation between various physical quantity. ठीक अछि, तो सीधा लिखली मु जाननी किछि कोनतला लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू m टू पावर x. ओके, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू y बिरो y z कमेंट कर देली. तो k एला डायमेंशनल कांस्टेंट. तो एबे कोन कली ए पुट कर देली खाली सब फाटा रे पुट करके x y z वैल्यू बाहर गेला. x y z वैल्यू बाहर सरला परे हम आगु पुट करले कोथरे ना इक्वेशन 4 रे पुट कर देले. पुट कला परे हमर आसी गेला दिस इज द आंसर. ओके, तो सिमिलरली ओके नोट कर लिया आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन जाउ जे. ओके ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ए अछि नंबर 2 क्वेश्चन. क्वेश्चन का स्क्रीन शेयर करा दिबो, देखियो स्क्रीन रे आसी पारे क्वेश्चन सब. सेकंड, ये सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या होता है भाई? सेंट्रीपिटल फोर्स, फोर्स तो मा, फोर्स तो पा. फोर्स बेटा फोर्स, फोर्स इक्वल टू मा. मैकेनिक्स रे फोर्स इक्वल टू मा. सेकंड पार्ट रे थर्मोडायनामिक्स पढिबा, थर्मोडायनामिक्स पढिबा, फ्लूइड पढिबा. सेठी फोर्स केते ना प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया भाई. तो फोर्स हो जी पा. द फादर्स फोर्स, दिस इज मदर्स फोर्स. फर्स्ट पार्ट बुक रे हम फोर्स पढ़िबा मा, सेकंड पार्ट रे फोर्स पढ़िबा पा. मदर्स फोर्स, फादर्स फोर्स. तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? अंकल आसी जे न्यूटन कांसेप्ट बेसिक कोई भी नहीं करा चैप्टर रे अछि, एक डायमेंशन पढौछि. तो सेंट्रीपिटल फोर्स माने न्यूटन अंकल कहले जब तक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो रेस्ट बॉडी कंटिन्यू स्टेट ऑफ रेस्ट, moving body continue its uniform motion in a straight line and its speed and direction doesn't change. But when a body revolves around a circular path at each and every point it changes its direction. Circular path रे body rotate कले each and every point रे ता direction को change करियो. अंकल कहले direction force नले change आवनी. अंकल कहले न्यूटन अंकल कहले विदाउट द हेल्प ऑफ फोर्स डायरेक्शन कैन नॉट चेंज. सर्कुलर पाथ रे मते बुलिबार अछि, मते साइकिल चलेबार अछि सर्कुलर ट्रैक रे. ईच एंड एवरी पॉइंट रे मो डायरेक्शन चेंज करबी. डायरेक्शन चेंज करबी हबो केमती? फोर्स ओडे फोर्स दरकारे. तो से फोर्स कोन ना सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर and keep the body moving in a circular path. बड़े बॉडी को सर्कुलर पाथ में बुलेला बेले बॉडी ऊपर एक कंटीन्यूअस ओडे फोर्स एक्टिंग करे along the radius toward the center and this force known as centripetal force. एटा को पढ़ेबी सर्कुलर मोशन में क्लियरली पढ़ेबी ता डेरिवेशन करेबी. तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ए जो सेंट्रीपिटल फोर्स हम कहउछु एफसी कहउछु, सिंपल फोर्स. से सेंट्रीपिटल फोर्स हो, विस्कोस फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, एनी फोर्स. फोर्स मीन डायमेंशन ऑफ फोर्स आसो, जो फोर्स भी आसो, से कंजर्वेटिव फोर्स आसो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आसो. ओके ठीक अछि. तो दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करछि कहा ऊपर ना मास ऑफ द बॉडी जे रोटेट करछि, मास ऑफ द बॉडी ऊपर डिपेंड करछि, आ तार वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करछि, जो स्पीड से जाउछि, आ रेडियस ऊपर डिपेंड करछि, जो सर्कुलर पाथ से बुलुछि.
भल कि बुझ कथा बेसी गपी दौर बोधी भल कि बुझ चेष्टा कर सेंट्रिपिटल फोर्स फर्स्ट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी velocity of the body and radius of the body radius of body radius of the circular orbit जो से बुलुची तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे तो सेंटीमीटर फोर्स रा फार्मूला कोन हबो आमे आंक भितर ए जो फोर्स मास वेलोसिटी आउ रेडियस आंक भितर रिलेशन एस्टैब्लिश करिबा सेंटीमीटर फोर्स तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करची मास ऊपर डिपेंड करची वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करची रेडियस ऊपर डिपेंड करची तो आमे ए तीन ने फार्मूला क्रिएट करिबा आंक भितर रिलेशन कोन अछि हम एस्टैब्लिश करिबा केमति करिबा से सिंपल फार्मूला से सिंपल फंडा तो सेंटीमीटर फोर्स तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करची सेंटीमीटर फोर्स तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करची भाई तो फर्स्ट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मास बॉडी mass to the power x clear bhai next this centripetal force proportional to velocity v y to the power y to say concept evam proportional to mass and radius of the body this is the z question 3 clear centripetal force depends on a likhi paribi centripetal force depends on centripetal force depends on three factor mass velocity and radius केमति रिलेट कर वाला तो कंबाइन करिबा कंबाइन these facts तो F proportional to m to the power x v to the power y r to the power z तो F equal to constant k पड़ेगा m to the power x v रो y r रो z ओके भाई दिस इज इक्वेशन केते ना 4 पड़े असला एंड दिस इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट भाई क्या है k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट k का डायमेंशन नहीं होता है भाई k इज डायमेंशनल लेस कांस्टेंट क्लियर अछि तो एबे 8 हम पुट करबा स्टार्ट करबा 8 पुट कर देबा कोन पुट करबा ए r डायमेंशन कोन हम जानते समझ फोर्स रे केते मन रहितबो m1 l1 t minus 2 this is the dimension of force here dimension nahi mass ro dimension is m clear to the power x velocity l1 t kete minus 1 so this is y radius ho jao length ro kete achi na bhai z to m1 l1 t minus 2 m to the power x l y t रो minus y multiply हो खाली l रो z एड ऊपर लिखिया देखा जो ना जो ऊपर लिख दो तो m1 l1 t minus 2 कैरी करथो कथा उडा m गोटे अछि m x l दीटा अछि भाई l y plus z बेस इक्वल है एक्सपोनेंट ऐड है जो t ओनली y t इज माइनस y कैरी पे कंपेयरिंग करे लेखोनी कंपेयरिंग करबा ये मास से तो मास इक्वल अछि मींस x इक्वल टू 1 तो t सहित मजिटा कोन अछि y plus z अछि y plus z इज इक्वल 1 दैट कैन देली t सहित t हेले माइनस y इक्वल टू माइनस 2 दैट मींस y इक्वल टू 2 क्लियर करो y इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 1 हो गला भाई तो y इक्वल टू 2 प्लस z इक्वल 1 तो z इक्वल टू 1 माइनस 2 तो z इक्वल टू माइनस 1 कैरी हला कैरी आउट हो गला जो x केटा असला x इज 1 y is 2 and z is minus 1 okay put this value putting value of x y z in equation 4 ए equation 4 रे पुट करिबा putting value of x y z in equation 4 equation 4 को पुट करिबा केता f equal k m to the power x ला 1 v y केते अछि स्क्वायर बाय z केते अछि सॉरी r रो z केते अछि z इज -1 ओके ठीक अछि m इज 1 अच्छा ठीक अछि तो f इक्वल टू k
m v स्क्वायर माइनस अच्छी तो r स्क्वायर हो गला भाई। तो एक्सपेरिमेंटल लिखा है बा क्वेश्चन में लिखा है तो k इक्वल टू 1 तो ये कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स ए फैला कहते हैं mv स्क्वायर बाय r सॉरी mv स्क्वायर बाय r नॉट r स्क्वायर भाई लिखते बोलले r एटा तो बोले r हो mv स्क्वायर बाय r दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला भी हम डिराइव कर देले हम जानू तले तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला कौन ए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आसीला mv स्क्वायर बाय r ओके क्लियर ला कांसेप्ट देखो एनी प्रॉब्लम हले कमेंट्स देले हमें आउ करे वीडियोटा करिवु हला ओके स्क्रीनशॉट ने लिखो थर्ड क्वेश्चन जीवा एबे स्क्रीनशॉट ले जाओ ये स्क्रीनशॉट ले जाओ थर्ड क्वेश्चन जाऊ जी गोटे अलग कंटेंट ने क्वेश्चन एटी क्वेश्चन का कांसेप्ट बुझाऊ चेष्टा करबनी कोटा कहा ऊपर डिपेंड करछि दिस द कांसेप्ट ओके तो से क्वेश्चन अछि द ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑर्बिटल वेलोसिटी हो एस्केप वेलोसिटी हो रिलेटिव वेलोसिटी हो टर्मिनल वेलोसिटी हो आउ करबी जेते वेलोसिटी अछि आस्ते आस्ते पडिबो ऑर्बिटल वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी अनेक वेलोसिटी अछि क्रिटिकल वेलोसिटी से सब नाम दे सब वेलोसिटी माने डायमेंशन सेम होबो ओके ठीक अछि तो एठी कहू छी द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन मु जानि सैटेलाइट कोन तू भी जान ना सैटेलाइट कोन हम जानते ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रो ऑर्बिटल वेलोसिटी ता डिपेंड करछि कहा ऊपर डिपेंड्स ऑन मास एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ एंड एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करछि कहा ऊपर ना मास ऊपर डिपेंड करछि भाई मास डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करछि हला सैटेलाइट रो अर्थ डिस्टेंस डिपेंड करछि एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर डिपेंड करछि स्मॉल g ऊपर डिपेंड करछि स्मॉल g जा s है कहि जा दिस द कांसेप्ट आउ किछि बुझाउ चेष्टा करना से ऑर्बिटल वेलोसिटी कोन से सब विषय में एबे जानिबनी आस्ते आस्ते जानिबा हम सीधा बोलछु ऑर्बिटल वेलोसिटी जहां पर काहे कि से ऑर्बिटल वेलोसिटी ता तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो तीनटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करछि से तीनटा फैक्टर को भले कि चिन्हछ कि मास को सब जानछ फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ डिस्टेंस माने कोन लेंथ ता से भी फंडामेंटल क्वांटिटी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g मु कहली एक्सेलरेशन जहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से l t-2 ओके ठीक अछि तो सीधा जीवा कोन आसु देखिबा तो सही फार्मूला रे करबा the velocity depends on first mass to the power x equals 1 है परिबो velocity proportional to radius to the power y equals 2 है परिबो velocity proportional to acceleration due to gravity ऊपर कहते z एस्पेक्ट भाई क्लियर तो this velocity depends on three factor ओके कंटेंट क्लियर जहां जहां आगु पढ़थली एबे जो वाले चला थे आप रे डायरेक्ट लिख परिबा v proportional to m to the power x r y g z ए लाइन को डायरेक्ट ऐड करबा आउ जे बेसी एडवांस से गली बेसी जानि जो सीधा लिख परिबा v equal to k पळे आसीबो m to the power x r to the power y g z सीधा ऐड करबा k is dimensionless constant k is dimensionless constant ए लाइन को हम डायरेक्ट जाई परिबा सीधा ए लाइन आस परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट ए लाइन को जीबी तो एबे हम तो पुट करबा तुमको डायमेंशन को पुट करबा फास्ट अछि वेलोसिटी माने m0 रहइबो l1 रहइबो t रो -1 रहइबो ओके के डायमेंशन लेस कांस्टेंट किछ नहीं तबरे मास अछि भाई फंडामेंटल पर मास m रहइला ओवर x तबरे r अछि r मींस कोन r मींस लेंथ l मींस इटी y रहिगला g माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी केता जो l1 t-2 ऊपर z आसी तो m0 l1 t-1 एटी m to the power x l रो y l रो z आसी l t रो -2z आसी m0 l1 t-1 m to the power x अछि l रो y plus z
t ର -2 जब भाई टी इक्वेटिंग कर दवा और कुछ नहीं दिस इक्वल टू दिस दैट मींस x इक्वल टू 0 हुआ तो y प्लस z इक्वल टू 1 माइनस 2z इक्वल टू -1 भाई t इक्वेटिंग कले -2z इक्वल टू -1 तो z इक्वल टू 1/2 कैंसिल हो गला तो z 1/2 y प्लस z इज 1/2 इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 1 माइनस 1/2 y इक्वल टू केता आसी बडी 1/2 1 रु 1/2 रे 1/2 आसीला ओके तो x y और z रो वैल्यू भी काढी गेला ओके एबे x y z रो वैल्यू काढी गेला x केता आसी गेला x 0 आसी गेला y केता आसी गेला हाफ आसी गेला z केता आसी गेला हाफ आसी गेला दिस वैल्यू को पुट करबा पुट करके दाओ v इक्वल टू k m m टू द पावर केता x अछि 0 सम नंबर टू 0 इज इक्वल 1 है जोने r y अछि केते हाफ 0 केता अछि z भी हाफ अछि ठीक अछि तो एबे v इक्वल टू k पळे आइला m 0 इज इक्वल 1 लिखिबेली r g अछि माने r 0 रूट ओके दिस इज द आंसर okay these are the answer okay the orbital velocity of formula hochi k r g k is a constant okay clear screenshot ले जाओ नेक्स्ट वीडियो रे हमें रिमेनिंग पार्ट ए रिगार्डिंग आउ किछि क्वेश्चन देखिबा जय जगन्नाथ।